Right. Hello, everyone. So till now we have seen what are comments and blank spaces in C programming, and now we will see what are tokens in C. So to understand what are tokens, we need to understand how the computer understands the code or how the computer reads the code. Okay. Understanding the computer process of executing a code is important to understand what are tokens and how are tokens used. Okay. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि कंप्यूटर हमारे कोड को किस तरह से रीड करता है। वो लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड रीड करता है। ठीक है। कंप्यूटर इज लाइक अ टॉडलर। अगर हम उसको कोई कोड फीड कर रहे हैं तो वो पूरे कोड को लाइन बाय लाइन उसको लाइंस में डिवाइड कर देगा, वन लाइन एट अ टाइम, और फिर हर एक लाइन को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, वन वर्ड एट अ टाइम। एंड देन आफ्टर रीडिंग द वर्ड, ओके, वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या अगला डिसीजन लेना है, वो क्या डिसाइड करेगा कि उसको क्या अगला एक्शन लेना है। ठीक है। तो वी कैन से दैट द वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज एन स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट, राइट। वर्ड्स को हम उससे छोटे यूनिट्स में divide nahi kar sakte because every word has its own significant importance. Every word has its own significance. All right. The smallest indivisible unit in C is called as a token. So हम इन हर एक word को कह सकते हैं token. Okay. Tokens are the building blocks of C code. Okay. Tokens can be defined as the smallest unit of C code. It is the building block of any code. Smallest indivisible unit of a token is called a smallest indivisible unit of a C code is called as token. तो let's imagine कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है, जिस तरह से कोई भी चीज एटम्स से बनी हुई होती है, जैसे हमारे हर एक सेंटेंस वर्ड्स से बने हुए होते हैं, उसी तरह से सी कोड टोकन्स से बना हुआ होता है. Tokens are the building blocks of code. There are 6 types of tokens: keywords, identifiers, constants, strings, special symbols, and operators. Okay, we will look at each of these tokens one by one. हम हर एक टोकन को समझेंगे डिटेल में कि हर एक टोकन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज ईच एंड एवरी टोकन रिप्रेजेंट्स. ऑलराइट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि टोकन क्या होता है प्रॉपरली. So let's imagine that this is a huge cube. Okay, ये cube हमारा code है. Just imagine this as a code. And if I'm dividing this cube into 4 little cubes, अब consider कि हम इन छोटे छोटे cubes को इससे ज्यादा divide नहीं कर सकते. This is the smallest unit of a cube. Okay, then if this huge cube is made up of this small 4 cubes, okay, then this small 4 cubes are the tokens of the huge cube. Okay, or this small 4 codes are the tokens of our code. Okay. This is how tokens are made. Tokens are the smallest indivisible unit of a code. Let's understand using a proper example. Let's take an example of a family. Family में क्या क्या होता है? तो family में parents होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. ओके, हमारे पास इस फैमिली का केस है जिसमें फादर है हमारे पास. ओके, हमारे पास मदर है, उनकी एक डॉटर है और उनका एक छोटा भाई है. ठीक है, डॉटर का छोटा भाई है और they have a son. So we can divide this family into 2 parts. We can say that we have parents and we have children. Once again, we can divide the parents into 2 parts. We can say that we have father and we have the mother. Okay, we can also divide the children into 2 parts, saying that we have the sister and we have the brother. Okay, so now, but can we divide the father? I'm sorry. Can we divide the father and the mother into much more parts? No. Can we divide the sister and the brother into much more parts? No. The father, mother, brother, and sister are the smallest indivisible units of the entire family, which means that the father, mother, sister, and the brother are tokens of the family. These are the building blocks of the family. इनके अलावा फैमिली इनकम्प्लीट है. अगर इनमें से कोई भी एक टोकन ना हो तो फैमिली इनकम्प्लीट रह जाती है. उसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी एक टोकन मिसिंग हो तो हमारा कोड इनकम्प्लीट रह जाता है. Okay, let's see the tokens in the Hello World program. जो अब तक हम लोग देख चुका है Hello World program है ये हमारे पास. तो इसमें हम tokens देखते हैं. This is the program and the tokens would be, the first token is a hash. Okay, you can see over here the preprocessor directive में जो हम hash को use करते हैं वो है हमारा first token. As soon as the compiler looks at this hash, वो समझ जाता है कि बाकी के कोड को मुझे एग्जीक्यूट करने से पहले इसके बाद का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है. The second is the word include. Okay, जैसे it sees the word include, इसको पता है कि अभी जो मेरे पास आएगा या अभी जो कुछ भी मेरे को दिया जाएगा एज इनपुट, मुझे वो पहले इंस्टॉल करना है तो ये प्रोग्राम रन हो पाएगा, वरना प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा.
Next, it sees this greater than sign. Okay, as soon as it sees the greater than sign, it knows कि अभी इसके अंदर जो दिया हुआ होगा वो मेरे को इंस्टॉल करना है. कहाँ तक इंस्टॉल करना है? Until it comes across the smaller, the lesser than sign. Until it comes across the lesser than sign. Okay, so this is how the tokens work. अगर उसको एक greater than sign दिखता है, then the computer will read until, or the computer will try to find the lesser than sign to execute the portion of the code between these two symbols. Okay, then we have this stdio.h जो एक library है, and then it encounters the lesser than sign, which means that okay, this has been done. I have to execute this line of code first. Okay, and I have to install this stdio.h library to run the rest of the code. और उसके बाद ही code run हो पाएगा. Okay, then once again it comes to hash include the greater than sign, stdlib.h, and the smaller than sign, okay, or the lesser than sign. This means once again it will run through the same process and it will then install the stdlib.h. Then comes int. All right. अगली हो जाती है टोकन int. जैसे ही int आ जाता है, इसको पता चल जाता है कि अब इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसका एक वो टर्म इंटीजर होगी. ओके, या वो टर्म इंटीजर होने वाली है. फिर आ जाता है मेन. तो मेन हमारे पास इंटीजर का एक नाम हो जाता है कि यहाँ हम जो कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं उसका एक नाम हो जाता है मेन. ओके, देन कम्स दिस ओपनिंग ब्रैकेट. जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आ जाता है, ये समझ जाता है कि ये एक फंक्शन है. ओके, एंड देन इट विल फाइंड फॉर द क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, और द क्लोजिंग पैरेंथेसिस. एंड देन एज इट एनकाउंटर्स द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इट अंडरस्टैंड्स कि ओके, ये हमारा मेन फंक्शन है और ये एक इंटीजर टाइप रिटर्न करने वाला है. राइट. Then it encounters this opening curly braces. As soon as it encounters this opening curly braces, कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि अब हमारे पास मेन का बॉडी स्ट्रक्चर देने वाला है, या जो मेन फंक्शन इसने बताया हुआ है उसका अभी मैं उसको एक बॉडी स्ट्रक्चर देने वाला हूँ. बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ पर एंड होता है? तो बॉडी स्ट्रक्चर एंड होता है जब हमारे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए. ठीक है, सो नाउ व्हेन द कंप्यूटर हैज एनकाउंटर्ड दिस ओपनिंग पैरेंथेसिस, इट विल ट्राई टू फाइंड द closing parenthesis. Now when the computer has encountered this opening curly braces, it will try to find the ending curly braces or the closing curly braces. Then comes the printf. Okay, जैसे ये printf को encounter करता है, ये समझ जाता है कि okay, now this is a function. printf एक inbuilt function है stdio.h में, और मतलब कि मेरे को कुछ print करना है अब screen के ऊपर. Okay, then it finds the opening parenthesis. ओके, मतलब ये समझ जाता है कि अब printf का मेरे को इनपुट दिया जाएगा कि जो कुछ भी इनपुट दिया जाएगा वो मेरे को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर. The 18th token is a really interesting token and it is an entire string or it is an entire statement that it has to print. Okay, we'll come to it later on कि यहाँ पे क्यों hello और world को अलग अलग tokens नहीं बताया गया है. Okay. 19 is the closing parenthesis. Okay, तो 17 और 19 एक पैर बन जाती है. जैसे ही उसको एक closing parenthesis मिल जाता है तो कंप्यूटर समझ जाता है कि printf के अंदर जो कुछ भी मेरे को इनपुट दिया गया था वो अभी मेरे को प्रिंट करना है. ठीक है. Then comes the semicolon. As soon as the computer encounters the semicolon, it understands कि ठीक है, चलो सेमीकोलन आ चुका है, इसका मतलब है कि अब मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं करना, मतलब इसके आगे ये लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, या ये लाइन का एग्जीक्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करूंगा अगली लाइन को एग्जीक्यूट. ठीक है. देन इट एनकाउंटर्स द वर्ड रिटर्न. रिटर्न जैसे ही एनकाउंटर होता है, इसको पता चल जाता है कि अब जो कुछ भी वैल्यू दी जाएगी वो मेन के लिए हमारा आंसर होगा. ओके, and then it encounters the integer 0, which means कि main के लिए हमारे पास आंसर है 0, right? And then it encounters a semicolon, which means कि ठीक है, अब ये line भी मैंने execute कर ली है, now I have to go to the next line. And at the end it encounters the closing curly braces, which means कि हमारा main का structure खत्म हो चुका है. Now it will check कि क्या कोई भी हमारे पास parenthesis है या कोई भी double quotations है, कोई भी क्लोजिंग या ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है या कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट्स है जो हमने क्लोज नहीं किए हुए. एज सुन एज इट फाइंड्स कि नहीं, ऐसा कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है जो हमने क्लोज नहीं किया हुआ है, इट विल अंडरस्टैंड दैट ऑल राइट, दिस हैज बीन डन. ओके, ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है एंड नाउ आई शुड रिटर्न द स्टेटमेंट और आई शुड टेल देम कि अभी मैंने मेन कोड को एग्जीक्यूट कर लिया है, दिस द प्रोग्राम इज डन. ओके,
इस तरह से कंप्यूटर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग. लेट्स गो अहेड. द मोस्ट इंटरेस्टिंग टोकन कम्स एट अ पोजीशन नंबर 18. ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टोकन्स के छह टाइप्स होते हैं, तो उसमें से फोर्थ टाइप वाज द स्ट्रिंग टोकन. ओके, लेट्स सी व्हाट वाज द फोर्थ टाइप. आई विल जस्ट शो यू कि टोकन्स के टाइप क्या होते हैं. ऑलराइट, so here the fourth type is string token. Okay, or strings that I have written. Okay, so what are strings? Strings are basically English statements that we have to print on the screen, or that we have to use. Okay, or that we have to use in the program. तो वो हो जाती है strings. So the position number 18 पे जो token थी वो थी hello world. Yeah, you can see the position number 18 पे जो token थी वो हो जाती है hello world. Okay, this is called as a string token. ओके, मैंने स्ट्रिंग आपको समझाया क्या होता है. स्ट्रिंग हो जाता है कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट या कोई भी जो हमको प्रिंट करना है या जो हमको कोड में आगे जाके यूज करना है. ओके, स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं या स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या होता है. तो एनीथिंग बिटवीन डबल कोटेशंस इज कंसिडर्ड एज वन. ओके, या एनीथिंग बिटवीन द डबल कोटेशंस इज कंसिडर्ड एज वन स्ट्रिंग. दिस डेटा टाइप इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के आगे एक ओपनिंग डबल कोटेशन है और एक एंडिंग डबल कोटेशन है. तो कुछ भी जब ओपनिंग और एंडिंग डबल कोटेशंस के बीच में आ जाता है तो वो एक टोकन कंसीडर करने में आता है और वो एक डेटा टाइप कंसीडर करने में आता है जिसका नाम है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, अ सेंटेंस, अ सिंपल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग. ओके, there is no need कि string be only a sentence, okay, or a string be only simple word, or string be only a special character या कोई भी number ही हो. String can also be a letter. Okay, I'll show you different types of strings, don't worry. So as long as it is between this opening and double ending quotations, ending double quotations, it is a string. Okay, now let's see. मैंने कहा कि स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है. आपने तो अभी ये कहा कि स्ट्रिंग एक स्टेटमेंट होता है. देन लेट्स सी कि व्हाट आर कि स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है. ओके, हियर वी हैव सीन कि स्ट्रिंग कैन बी अ स्टेटमेंट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्ट्रिंग इज अ स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया स्टेटमेंट के. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स स्ट्रिंग कैन बी. ओके, तो कैन स्ट्रिंग बी अ लेटर? यस, स्ट्रिंग कैन बी अ लेटर. दिस इज लीगल. कैन स्ट्रिंग बी अ स्मॉल लेटर? Well, yes, string can be a small letter as well. This is also legal. Can string be a number? Hmm. Well, yes, string can be a number. This is also legal. Okay. Uh, can string be a decimal? Yes, string can be a decimal as well. This is also legal. Okay, then can string be a special character? Well, yes, string can be a special character as well. This is also legal. Okay, so string can be anything. Anything that we write in between, anything that we can write in between the double and ending quotation is a string. Okay, ये मैं बैकस्लैश एन क्यों लगा रहा हूँ, इसका मीनिंग आपको पता है कि ये नेक्स्ट लाइन का दिस मेक्स आवर आउटपुट गो टू द नेक्स्ट लाइन, इसलिए मैंने लगाया हुआ है बैकस्लैश एन. ठीक है, वो मैंने आपको जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम समझाया था तभी एक्सप्लेन किया हुआ था. ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी कि क्या आउटपुट आता है. ओके, देयर इज, ओह यस, सेमीकोलंस ही नहीं लगाया मैंने. आई एम सॉरी. सेमीकोलंस एवरीवेयर. आप देख रहे हो कि अगर मैं सेमीकोलंस नहीं लगा रहा हूँ देन हाउ मच इंपॉर्टेंट द सेमीकोलन इज. इफ आई एम नॉट पुटिंग द सेमीकोलन देन आई एम गेटिंग एन एरर. ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे उसको रीडिंग खत्म करनी है, एक लाइन की रीडिंग और लाइन की एग्जीक्यूशन कहाँ पे खत्म करनी है. नाउ लेट्स रन एंड हियर यू कैन सी each and everything has been printed on our screen. Okay, ये दो statements है. This is a capital letter, this is a small letter, this is an integer, this is a decimal point, and this is a decimal point or a floating point, and this is a special character. So here we go. Here we can understand कि string can be anything and what are string tokens. Okay,
आई थिंक सो कि आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा कि इस पूरे कोड में जो ये हमारे पास नया कोड है उसमें क्या क्या टोकन्स हो रहे हैं। ओके, आई थिंक सो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।